Our second presentation is by Professor Siddhanand Sinha, and he will be talking about the challenges of the opportunities before social geography. And he belongs to a school, or what I can call is the Gharana in CSRD, the social geography, where the pioneering work in the social geography was done by Professor Ahmed. But I have seen myself, Professor Siddhanand Sinha, in fact, contributing in that particular project very effectively. And in fact, we have seen the field of social geography as one of the fastest growing field in India. I can claim that, although I'm not a social geographer per se, because I'm a agricultural geographer basically, but I generally see hear the echoes of the social geography in my house also. That's very common for me. And there's a very large society, there's a very large family that in fact he is head of, and I'm sure he is going to reveal something very special, or some a very clear directive, or a kind of perspective for the social geographers in this country. Professor Sinha. As it normally happens that I decide about something, but towards the time that I have to make a presentation, I change my ideas. And after listening to Professor Deepak Mishra, such a comprehensive presentation on what he really talked about adaptations, and how he looked at adaptations and the processes of adaptation in view of climate change. I feel that while I'm just extending his argument, and I'm not going to talk about social geography and challenges before social geography, because I know, the challenges before social geography today is the new education policy. So better not talk about that, because there is a bar all over. There is a flooding situation, and in which social geographers have very little to say. They are only raising their hands, and only this much is visible above the water, their neck and their. In spite of whatever my friend Mahavir Singh Jaglanji said, that social geography has made a tremendous progress, it's a matter of history. My presentation, therefore, is going to be on two important things, which I thought is missing from the discourse. Alongside, the number of issues that Professor Deepak Mishra talked about. One is that, we have taken it for granted a certain kind of a definition of sustainability, sustainable development. I would like to ask again a basic question which was talked many, many years ago by an economist and a political scientist, and then it came to geography. Sustainability for whom is the basic question. Whose sustainability is being talked about? You want to see the market that is sustainable, or people, practices which is sustainable. In fact, this really raises an important question. It's not about tradition versus modern. It's not about science and technology versus something else. It's basically about survival of the people, And we are always being told, and we have been told all through, that, we are moving towards sustainable development. We have series of these sustainable development goals, and it's exactly like we keep ranting, shikari aayega dana dalega, lobh se usme phasna nahi, and we do exactly the same thing, and we are just not bothered about. And in fact, the whole structure of how the sustainability needs to be defined
is posited from a perspective which is the perspective, I'm not saying West, but I'm certainly saying a perspective from above. So therefore, in this entire scheme of things, as geographer, as a student of geography, I feel that, if we are talking about sustainability as a kind of future in view of all the kinds of challenges that we have, then how about linking it up with something that the geographers did talk about long time ago but then gave up? And that is what it really means to the question of diversity, which in fact is generally posited today in the classroom, that diversity is an antithetical to prosperity. In fact, it is diversity which in fact holds the key, and that is what Professor Deepak Mishra talked about, that there are differential adaptations. But I would like to add a footnote that this differential adaptation is by virtue of the fact that you leave me all alone, isolated, enclosed in a particular kind of a situation by law, by market, through the financial resources which you and I do not have the capacity to mobilize, and therefore I am left to have a certain kind of an adaptation. Marta kya na karta. So that is the point which I am really trying to. Differential adaptation, the process that is there, which Professor Deepak Mishra talked about, is very well documented, and it needs to be documented all the more. But this differential adaptation as an outcome of something which in fact is so stringently tied around your neck by the international capital, financial capital, is something that we need to really address. We geographers are happy as political activists, we are happy saying that, think globally, and what is that? Act locally. And when you act locally, then there is this law, what Adam Smith said long time, the arms of the market, which comes and takes care of that. You create resources, and then there is somebody who puts a claim on the resources. It doesn't remain yours. You are dispossessed, that Professor Deepak Mishra talked about. So we need to in fact look into all those aspects. But the point that I am trying to present before you in another 5 minutes is the question of law and federalism. Don't you think that while we have over the years especially, and it's also quite an ironical thing, that when we in India opened the market, so-called globalization, liberalization, and whatever privatization, LPG as people say, is that what they say? And when I hear it, I hear LPG which could be put on fire. तो लीकेज ऑफ एलपीजी का तो बहुत है, हम नीचे से जलना शुरू हो जाता है. मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जैसे लिबरलाइजेशन आया, अब मैं हिंदी में आ रहा हूँ क्योंकि दिल की बात कह रहा हूँ, वैसे ही हमारे देश में एक वो संशोधन भी हुए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी हमने कहना शुरू किया. और उन्हीं दिनों पे अमर्त्य सेन साहब को भी अवार्ड दे दिया हमने. कुछ है संबंध, हम ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम गुड बाय करने वाले थे वेलफेयर इकोनॉमिक्स को, वेलफेयर स्टेट को. हम कह चुके थे भैया बंद करो, बहुत हो गया, अब तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कि तुम प्रोड्यूस करो और तुम बाज़ार में बेचो. आप अगर बॉम्बे प्लान के डॉक्यूमेंट्स को देखें, जब बना था तब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने कहा था कि हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हम इतना इन्वेस्ट कर सकें. वो पब्लिक सेक्टर को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को ही आगे आना पड़ेगा. और हमने वो करके दिखाया, चाहे उसमें कितनी भी सफलता मिली. लेकिन इस तमाम सारे प्रोसेस में
जो फेडरल स्ट्रक्चर था गवर्नेंस का, उसको हम कहीं ना कहीं मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे थे। और अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें हम फेडरलिज्म की बात बहुत ऊंची आवाज़ में करते हैं, थिंक लोकल, लोकल विज वोकल की बात करते हैं। वेयर इज लोकल वोकल? हुज प्रोडक्ट इज वोकल? हुज प्रोडक्ट इज सेलिंग इन द मार्केट? Uncle Chips is destroying my local chips manufacturer in my town. He doesn't have a market. Systematically, we did away with them after Notbandi. And then we are talking about making local vocal. So the classic model of accumulation seems to be operating here again. And that is that, Deepak ji talked about the question of labor. और हमारे सोशल ज्योग्राफी में हम कहते हैं कि वो हमारे सोशियोलॉजिस्ट मानते नहीं इस बात को, लेकिन हम बार बार कहते हैं उनको कि दो ही मुद्दे हैं हायरार्की को समझने के लिए, एक है लैंड, दूसरा है लेबर। लैंड जो कंट्रोल करेगा वो लेबर नहीं करेगा, और जो लेबर को कंट्रोल करेगा वही लैंड को भी कंट्रोल करेगा। ये देखिए, बड़ा सोचा समझी व्यवस्था है। व्यवस्था का कहेंगे तो कुछ और भी चीज़ याद आ जाता है। तो मुद्दा ये है कि जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, हम कह रहे थे लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करी हमने, हर स्टेट में पंचायती राज का मुजाहरा किया, हम हर जगह पंचायती राज को बड़ा स्ट्रेंथन किए चले जा रहे हैं, पंचायती राज के खर्चे भी हो रहे हैं, उनको एलोकेशंस भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं, मैं पंचायती राज के पक्ष में हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो इस बात को गारंटी करे कि हम तय करें, हमारे लोग तय करें, हमारे पंचायत तय करें, हमारे जिला परिषद तय करें कि हमारे रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए। ये कौन है जो ऊपर से कॉरपोरेट जो है वो तय करता है, मार्केट जो है वो तय करता है? क्या आपके खेत जो यहाँ पे कुछ सालों से मैं गढ़वाल का वासी हो गया हूँ, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मेरे गांव के आसपास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई 1 एकड़ ज़मीन पे भी खेती नहीं हो रही है, बंजर पड़े जगह है। और हम प्रमोट क्या कर रहे हैं? टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आएगा, उस इन्वेस्टमेंट का एक ही मुद्दा है, वो ये है कि कितने साल में हम इस पैसे को वसूल लेंगे। 7 साल से 10 साल उसको रिटर्न आ जाएगा, उसके ऊपर हो गया तो उसका बोनस है। तो 7 साल में अगर वो स्ट्रक्चर रहा तो आपके लिए रहा, या नहीं रहा, बह जाएगा तूफान में या लैंडस्लाइड में, वो आपकी मर्जी। आपका नुकसान है, वो तो अपना पैसा बना के चलेंगे। तो ये जो रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल है और मार्केट की जो पहुंच है, हमने मणिपुर में देखा, एक छोटी सी स्टडी हमने की थी वहाँ पे हमारे स्टूडेंट के साथ। आपने इतने सारे टनल्स वहाँ बनाए हैं, 22 टनल्स को तो हमने खुद देखा है। यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने देखा होगा रेलवे के एक्सपेंशन में, और वहाँ पे हुआ ये हालत है कि सारे के सारे हिल्स जो हैं वो बैरन हो गए हैं। दे आर अनेबल टू सपोर्ट द फॉरेस्ट। व्हाई? बिकॉज with every drilling inside, you have drained the underground water resources to the extent that it has to be scientifically established. I haven't done any kind of a scientific study. But people are reporting that, their production has come down. And once that happens, they will now be available to be selling their labor at a very low cost in Northeast Frontier Railway construction. And that Northeast Frontier Railway construction from Jiribam to Moreh and beyond in Southeast Asia will carry the goods for the market, which in fact is being created. So the interest is not the Northeast. The interest is to use the passage for the market, both ways, so that it cuts down the cost of travel, especially the goods distribution. Why are we so much averse
If we look into the map of India, I'm really concentrating on Indian situation. What do we see? We see that the areas where you have high concentration of tribes are also the area with very high mineral resources. And isn't it some kind of irony कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी भी वहीं, सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी भी वहीं है, और सबसे ज़्यादा क्राइम रेट भी वहीं है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, अब ये क्राइम रेट डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं अगर आप इनको ज़रा सा मैप करने की कोशिश करें, और इन्हीं सारे इलाकों में जो गवर्नेंस का जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इन्हीं सारे जगहों पे लोगों को ये अख्तियार नहीं है कि वो अपना भविष्य और अपना वर्तमान तय कर सकें। अभी कहाँ पे मैं तो जिक्र करना चाहूँगा मुद्दा जो है लद्दाख का, वो तो शेड्यूल में एंट्री चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हमारा पर्यावरण है, हमको उसमें भागीदारी चाहिए, हम अपना तय करेंगे भविष्य। किसी सरकार को क्यों इसमें वेदना से वो बिल्कुल परेशान है, क्योंकि कोई ना कोई जो पैसे वाला है उसके इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ने वाला है। ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि अगर जिस तरीके के आप बात करने वाले हैं क्लीन एनर्जी पैदा करके पूरे उस इलाकों को बचाने के लिए, या आपको मालूम है यू आर गोइंग टू रियली स्पीड इनहांस द रेट ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट। द रिट्रीट कहीं होगा उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दोज पीपल आर नोवेयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, they are seen just as laborers. And that is why, you know, when cheap labor, free labor, that's why when Professor Deepak Mishra was talking about enclosures, this reminded me of the policy of the government of India in the new education, that is national education policy, where in the name of the tribal education, promoting tribal education, they are saying there will be special schools, you know, in exclusive educational zones. Just find out what this exclusive educational zone really mean. And let us look at the statistics of the government of India as produced by the government of India. Nearly about 1.5 lakh schools have been closed down in about since 2016. And they're all in areas where you have low population. ट्राइबल एरियाज में लो पॉपुलेशन होगा और आप कहोगे कि भैया ये अनइकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है ना। अब हमारे पौड़ी के बहुत सारे गांवों में कितने घर बचे हैं? 100 घर जहाँ थे वहाँ तो 20 घर में लोग रह रहे हैं, 10 घर में और कहीं कहीं तो 100 घर गायब हैं। वहाँ स्कूल बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ 20 घर भी बचे हैं, पहाड़ी जगह है, वहाँ के बच्चों को क्या ये हक नहीं है कि वो प्राइमरी एजुकेशन में घर के बगल में उनको बंद किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है हम तुमको सवारी देंगे, तुम दूसरे जगह चले जाओ। You cannot decide in spite of the fact that the investment has come from public money. And government in the name of rationalizing, but sir, it's also very interesting that these are the places where schools are being closed down, are also the places where private investment in education has started taking place. So you have to understand, it is uneconomic expenditure of public resources versus encouraging private investment in education. The idea is very simple. जहाँ पे इतनी जनता है, इतने बच्चे हैं, वहाँ कहाँ पैसा है? एजुकेशन में पैसा है। तो अब तो हायर एजुकेशन के लिए तो आप ज़मीन बेच के आपके माता पिता आपको पढ़ा ही रहे हैं। अब बच्चे जो ये छोटे अभी तक फ्री एजुकेशन पा रहे थे, वहाँ पे टीचर नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, अंग्रेज़ी बोलने वाला स्कूल आएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल आएगा, तो वो बच्चे फिर वहाँ जाएंगे। सभी को अंग्रेज़ी पढ़ने का हक है,
मैं अंग्रेज़ी मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम वर्सेस तेलुगु मीडियम वर्सेस इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। सबको अपने मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार है, लेकिन वो जब इख्तियार छीन लिया जाता है तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप चीप लेबर के तौर पे बाज़ार में मौजूद हो जाएं। ये केवल बिहार की कहानी नहीं है, तो जो ये तमाम हिंदुस्तान की कहानी है। 45,000 स्कूल तो केवल झारखंड में बंद हुए हैं, 29,000 स्कूल तो कहा जा रहा है कि बंद होंगे, लेकिन यूपी में, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलरेडी वो 50,000 से ऊपर स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये रिसोर्सेज पे, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ पे कौन पहरा लगाए बैठा है, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इस बात को भी समझना पड़ेगा कि डिफरेंशियल एडेप्टेशन केवल गरीबों के लिए हम सोच सकते हैं, उन सारे मुख्तलिफ इलाकों के लिए सोच सकते हैं जहाँ पे मुश्किलें दूसरे ढंग की हैं, बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ती चली जा रही हैं, जहाँ स्टेट का इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, जहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग, जिनके लिए बाज़ार में हर चीज़ मौजूद है और उनके लिए हर चीज़ आप देख सकते हैं ना। आप पता कर लें, किसी भी देश में, हिंदुस्तान में ही देख लीजिए कि जिस समय सभी की इनकम गिर रही थी, चंद लोगों की इनकम और उनका, है ना, बढ़ता चला गया। चाहे 2016 हो, चाहे 2019, 20, 21 हो, कोविड का समय हो और उसके बाद का भी वक्त हो। आशा है आप लोगों ने कम पैसे में इस बार दिवाली मनाई होगी। जीएसटी नहीं है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि आपने कितने कम पैसे में दिवाली मनाई होगी, क्योंकि मैं जो आटा खरीदने गया, अभी कुछ 3 दिन पहले की बात है, इधर आ रहा था, मेरा गांव पास में है, तो सोचा आटा लेते जाऊँ, यहाँ तो आटा पैदा नहीं होता। तो सुना कि वही आटा जो पिछली बार 45 रुपये किलो था, इस बार 52 रुपये किलो मिला, जीएसटी के हटने के बाद। सब हम तो छापते नहीं है ना प्राइस, एमआरपी तो हम नहीं छापते। अब बहुत दिन आपने एमआरपी देखा, अब कुछ दिनों के बाद एमआरपी भी हट जाएगा, एम हट जाएगा, आरपी रहेगा, या वो भी हट जाएगा। बाज़ार के सहारे हैं। आप कहिएगा ये केवल आटा दाल के भाव ही नहीं है, वो सोने और चांदी के भी भाव में तब्दील हो चुका है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ इन सारे मुद्दों पे भी बात कीजिए। भूगोल के होके आप ये मत कीजिए कि मैं सिटीजनशिप पे बात नहीं करूँगा और मैं ये जो हमारा जो मॉडल है, फेडरल मॉडल है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। फेडरलिज्म ही एक तरीका है जिससे कि हिंदुस्तान के हर आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। बिना लड़ाई के कोई भी चीज़ आपके पास स्वतः नहीं आने वाली। और फेडरल स्ट्रक्चर पे सबसे बड़ा कब्ज़ा है, बाकी चीज़ों पे तो कब्ज़ा हो चुका है, अब धीरे धीरे फेडरल स्ट्रक्चर पे भी कब्ज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।